बचपन में पीपल से कि जब आप जिम जाते थे आपका श्वार्ज़नेगर की फोटो दिखती थी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, हमारे जो इंडियन सुपर हीरोज होते थे ना, when we used to go to our gyms, when we learnt how to look good, how to look menacing, Rahul sir always was there. So Arre, thank you sir. so much. हमें join करने You're making me sound ancient, yeah. No, but you are always one of the most disciplined people. बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं how much hard work goes with discipline in reaching where you have to reach. When you look at your career, when we look at Bollywood, we look at various things. आज बड़ी आसानी से लोग बोलते थे मेरे कोई contacts नहीं है, मेरे कोई पिताजी नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है. उस जमाने में भी नहीं था. उसके बावजूद everyone had to you try. have a Shah Rukh Khan story. No, but वो एक आध रहती huge. है. All these guys, yeah, the Mohicans, all of them. If you look at all the three Khans, Yeah. if you look at Mr. Kumar, Yeah. if you look at any of these boys, they're all self-made stories. But you were also one of those stories that was more reachable for all of us. I remember when we were growing up, and all of us, were trying to figure out whether this is a world that we can all be part of. You were already part of this world. You've seen the transformation over the years. It's also been the most insecure industry forever. आज अगर youngsters और ज़्यादा आ रहे हैं या फिर दूसरे talented जगहों से लोग आ रहे हैं, दूसरे medium से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, is now the most competitive time या फिर पहले भी इतना ही competitive था and it was as insecure then also. Yeah, I don't know, insecure, I wouldn't like that word. I like the word creative. See, the more people come in, I feel, and I genuinely feel so, कि जैसे जितने नए लोग आ रहे हैं ना, उनका एक अलग तजर्बा है. कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, एक अलग माहौल से आ रहा है कोई. So I think what you learn from them is just learning purely. So if you're working with a new set of actors, what happens is that a lot of them are very, very serious about their craft, and also the way the stories are written nowadays, the screenplays are written, thank God for the OTT, at least a lot of it which is quite good. I would say fairly some OTT is quite good today यार in terms of creativity. True. तो क्या होता है कि अभी अच्छा कोई काम कर रहा है तो naturally your work also goes a notch higher. Correct. है ना? Because you have to suddenly मतलब आप भी महसूस करते हैं कि क्या कर रहे हैं, आप भी so it's very inspiring on the contrary for somebody like me, I feel, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता था कि एक पहले ना एक फॉर्मेट होता था एक सिनेमा का ना, कि हीरो हो गया, एक विलन हो गया, एक किस्म की कहानी हो गई. अभी वो फॉर्मेट बदल गया. अभी एवरीवन इज प्लेइंग पार्ट्स. और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले होता था, बट मोर ऑफन देन नॉट उस किस्म की जिंदगी तो एज अ विलन ही ऑलवेज प्रोजेक्ट की गई थी बिकॉज ऑफ योर बॉडी एंड बिकॉज ऑफ द वे यू वर. और भारत में अगर आपकी बॉडी थी तो चाहे आपसे कई साल पहले बॉब क्रिस्टो, आपके टाइम पर आपकी बॉडी, आपके आने के बाद अब जाके हीरोज ने वापस बॉडी बनानी शुरू कर दी है. यू फील यू टू अर्ली इन योर टाइम विद बॉडीज? नहीं यार, माय टाइम आल्सो आई फील के संजय दत्त, संजू बाबा, सलमान खान, सनी पाजी also, सनी पाजी, Ritik, so many people, yeah. So there was always an awareness here. I mean, you can't be in this profession and not be aware. Like, let's go into yesteryears. Dharam ji, Jeetu ji, all these guys were very aware of. But do you think it like sort of typecasted you for a bit? Because मेरे को now when I see new generation of actors, they don't want to make a physique. They say कि आप फिर वो typecast हो जाते हो. ये dude है. Casting directors बोलते हैं, directors को भी कान में डाल देते हैं, सर ये ना थोड़ा सा वो boy, वो अलग type लग रहा है, boy next door नहीं लग रहा है. You think it's no, I feel, see, it'll always be a coexistence medium. If you look at mainstream cinema today also, mainstream. Yeah. I mean, you have a Tiger Shroff. Yeah. You have a Varun Dhawan. Yeah. Say a generation, if I go to my times, there's still a John Abraham. Yes. So, if you look at other changes, there's a Mr. Tripathi. There's a Mr. Nawazuddin. Yes. And there's a whole lot of others that they've given open doors for. Yeah. I feel the whole idea is to mix, match and collaborate both the things together and develop a handshake. And I don't think कि कोई शरीर बनाएगा तो इसका मतलब वो typecast होगा. I'll give you one example who has not been used well. Sharat Saxena. He's a fabulous actor actually. बट वेरी उस टाइम पे ऐसा था कि उनका शरीर इतना तगड़ा था कि उनको ना उस किस्म के रोल्स ज़्यादा मिलते थे.
बट आई थिंक बॉक्सर पहलवान में ही उनको डाल देते थे. तो अभी मगर देखोगे ना जो अभी के डायरेक्टर्स हैं या अभी के जो राइटर्स हैं, ऐसा नहीं है. आई मीन आई एम डूइंग ऑल वेरिड रोल्स. आई एम प्लेइंग अ डीन ऑफ हॉस्पिटल इन सम प्लेस. आई एम प्लेइंग अ सीबीआई ऑफिसर इन सम प्लेस. So it's very. Now, of course, It's just changed. Yeah. It's become very real. The writing has become more believable. It's more जो हम लोग घर पे बात करते हैं, आपस में बातें करते हैं, वैसी खुशबू है. That is reflecting in the audience also. That is the audience, and that is why it's become like this. Yeah. It's always the audience dictates, not the other way around. I feel because if you keep on giving them वही देते रह जाओ और वो reject करते जाएगा, तो जब वो रिजेक्ट करेगा तो क्या करेंगे आप लोग, दोबारा से सोचेंगे. तो एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स अ न्यू वेव ऑफ पीपल. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिएटिव वेव ऑफ पीपल एंड इट्स बेस्ट. आई समटाइम्स फील कि यार आई विश आई वाज बोर्न 20 years later. यू नो, आई मीन दिस इज वी गेट एजुकेटेड. अभी भी आप वैसे ही लग रहे हो बाय द वे. नहीं, देयर इज लॉट ऑफ वो सॉल्ट. वाइट को छोड़ के वो तो आधे हमारे ऑफिस में कैमरा के पीछे मेरे सारे यहाँ पे कैमरामैन वाइट है उनके, वो सब ब्लैक करके आ जाते हैं. वो कैमरामैन है ना, अभी क्या हम लोग आ गए कैमरा के. बट टेल मी समथिंग, दिस होल डिबेट नाउ दैट्स कमिंग, यू नो, जैसे कि लोग बोलते हैं वो लाइफ इज अ रीसाइकल. तो अनिल कपूर साहब बोलते थे पहले भी साउथ सिनेमा बहुत अच्छा चलता था, बीच में बहुत बड़ा गैप आया. अभी हाल ही में आई वाज विद किच्चा सुदीप, आई वाज इन बैंगलोर. सो ही सेड ब्रदर, you don't know the countless flops that we have in the middle of these big 2-3 big films जो सपोजिंग हिंदी मार्केट को पता चलता है इसके बारे में. बट प्रॉब्लम ये क्या हो गई है कि वही 2-4 फिल्में यहाँ पे जो वहाँ भी चली वो यहाँ भी चली और वो OTT पर भी चली. जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉलीवुड के ऑडियंसेस, हिंदी फिल्म ऑडियंसेस की आ गई है, अब उनके हाथ में वो रिमोट आ गया एंड दे डोंट माइंड वेटिंग, चाहे वो 4 हफ्ते हो, चाहे 8 हफ्ते हो, चाहे वो 12 हफ्ते जो प्लानिंग चल रही है शायद. They don't mind waiting sometimes. How do you think Hindi film industry will survive as a mixed version, or do you really think there will be a proper market like in Bombay to see a film? इतना खर्चा हो जाता है अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ जाओ, 4-5 रुपए तो लग जाते हैं एक पिक्चर देखने के लिए. So people say that चलो रुक जाते थोड़ा. पता नहीं यार, I don't have a globe, otherwise you know I could have answered you looking into the crystal ball कि यार ऐसा होने वाला है. But I feel जो by and large जो रूल ऑफ थंब वो यही होने वाला है. अच्छी कहानियाँ, अच्छी खुशबू उस कहानी की हो, अच्छी तरह से उसे डायरेक्ट किया जाए, अच्छे एक्टर्स उसे परफॉर्म करें, तो ये सारा मिलजुला के एक यू नो एक ऐसी खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, वट एवर यू माइट कॉल इट, ऐसा कुछ बन जाएगा दैट यू नो पीपल वांट टू ईट इट और वांट टू सी इट, वांट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन. आई थिंक इट्स मोर अबाउट दैट. आई मीन लुक एट द वेरिएशन इन सिनेमा टुडे. आई मीन यू हैव अ रोहित शेट्टी brand of cinema which is so entertaining also, yet it gives you have another Anurag Kashyap brand of cinema also which is also so interesting. Then you have another kind of, so everything is there, so there's space for everyone. And as far as the Hindi and thing goes, pata nahi yaar, I've worked fairly down south. I've over 30 films in Telugu under my belt. I have about 17 Tamil films, 16-17 Kannada films, 5 Malayalam films also, 2 with the legendary Mohanlal, over 70 Hindi films. So I don't know. Did they view this side as a money earner for them? This side? Yeah, Hindi. No, yeah, I think it's because of the OTT. Now, what happens is that that 2 years everybody was at home. They started watching things from everywhere. Other places. And when you start watching things from everywhere, you know, this thing also comes across, this thing also comes across, and then you have these platforms where you watch them from. So, abhi though they've started going to the theaters also for South films, some of the South films which work. But again, you're right, what your friend pointed out, our friend pointed out, वो होता ही यार कि कितनी फिल्में होती हैं जो चलती नहीं हैं, उनके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है, और जो पिक्चरें चल जाती हैं उनके बारे में हमें पता होता है. और वो हिंदी में भी यार, यहाँ पे भी कितनी फिल्में बनती हैं साल की, और फिर कुछ चलती हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता होता है, जो नहीं चलती हैं उनके बारे में कम पता होता है. बट आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टू बी कोएग्जिस्टेंट, ऑल एवरीथिंग, एंड इट्स गोइंग टू बी ओनली बेटर. बिकॉज अगर कहीं कुछ अच्छा कुछ बन रहा होता है, मुझे याद है मैं मिस्टर राजामौली के साथ सिम्हाद्री करी थी. इट वॉज अ ह्यूज हिट. आई थिंक 2006 या 5 की फिल्म है, और यहाँ पे मैं लोगों को इंथुजियास्टिकली बोला करता था उनके बारे में, तो लोग इतना नहीं पहचानते थे उन्हें. बट अभी बाहुबली के बाद आई हैव टू टेल पीपल यार मैंने उनके साथ एक फिल्म करी है, यू नो व्हाट आई मीन. सो एवरीबडी नोज अबाउट हिम.
So I think it's just that. And the good thing today is that the audiences want to watch all kinds of cinema as long as it is good. So that's a great thing. You know, I feel sometimes, Rahul Dev, for a long time, you got the power that, you know, the Indian audiences knew you for so long. Then there was a sabbatical on your part from public consciousness. You know, अभी आप जैसे बोल रहे हैं 100 फिल्में के करीब डाउन साउथ हुई हैं. नहीं 100 तो नहीं 60-70 फिल्में क्यों नहीं That's शायद. incredible, sir. वो तो लोगों के 2 करियर 3 करियर मिला के शायद नहीं होती है. हिंदी फिल्में की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. Do you feel now that maybe I should have been more active? नहीं यार मेरा वो एक लाइफ में ऐसा कुछ हो गया ना. I mean I lost my wife to cancer. Yes, Working that time, remember that Yes. fight club के. Yes. तो उस दौरान फिर I had options. My son was like really young. He was in class 6. So अभी being a nuclear family मतलब there's just 2 of us. Now he has to go to school, and at that time, only during lockdown people rediscovered shooting in Bombay. But उस वक्त तो यही होता था यार कि जो भी फिल्म शूट होती थी मुझे नहीं याद मैंने कुछ भी मुंबई के अंदर मैंने 2 फिल्में शूट की हैं टोटल. एक मैंने की है फुटपाथ सेट था. एक मैंने की है भगत सिंह की जो कहानी थी जो दियोल्स फैमिली की थी क्योंकि उस टाइम पे 3-4 बन रही थी सबने सेट लगाया था. उन 2 फिल्मों के अलावा जितना भी काम किया था कभी आप बाहर जा रहे हो कभी आप कहीं जा रहे हो कभी हैदराबाद जा रहे हो. सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी अ पेरेंट you know, and it's a difficult thing. I mean, I've lost my wife, he's lost his mother. You know, disease comes in. So I think 11 तक मैंने ख़त्म की थी फिल्में. 2009 की ये बात है. मई 16 was a very difficult time for us. That to the 2011 I completed, and then 11 I moved to Delhi. तो 4.5 साल काम ही नहीं किया. और फिर जब वापस आने की कोशिश कर रहे थे तो काम नहीं मिल रहा था. तो मुझे याद है कि मैंने फिर वो एक बिग बॉस जैसा भी कुछ किया. बट अभी ग्रेजुअली फ्रॉम देयर ऑन देन यू नो देयर वाज अ मुबारका देयर वाज अ डिशोम एंड देन यू नो ग्रेजुअली थिंग्स पिक्ड अप. आई एम very busy right now, but it's the OTT space mostly. So I mean I've had with God's grace what 9 releases in the lockdown. That's quite a lot of course, and that's just the releases. जो उसकी shooting रही है. I mean sometimes so much goes behind it. I was sitting with Ranbir the other day and he said आप लोगों को लगे मेरी 4 साल से फिल्म नहीं आई है लेकिन दोनों को मिला के मैं 412 दिन शूट कर रहा था दोनों फिल्मों के लिए. तो मतलब वो पिक्चरेट बनने में टाइम लगता है ना. लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि तवा में. नहीं वो देखो यार जो वो बात कर रहे हैं थिएट्रिकल रिलीजेस की. मैं बात कर रहा हूँ जो रिलीजेस है सपोज तोरबाज रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स. देन लास्ट ईयर आई हैड अ वेरी नाइस शो फॉर निखिल अडवानी's company. I enjoyed working on The Empire. Which you did wonderfully well. Yeah. So like हमारा इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स बन गया था वो. बन गया था. आई थिंक वो अगेन यू नो द वे द होल पॉलिटिक्स ऑफ द होल सिचुएशन इज वी बोथ नो सो वी कांट टॉक अबाउट इट. बट I think you know what happens a lot is when you start seeing the amount of work. Today Wikipedia becomes very important for most people. They can end up seeing how much work is going on. Then you start to say, my God, there's so much work that people are doing, which is true. But the point is that you become very selective. So after a point of time, you realize कि यार ये मैंने देखा है कि नहीं देखा है. But beyond that, there's so much more that is coming in 22 also now. Congratulations on you coming back with such force. I think it's my master's grace here. Frankly, I have another side to me, which I keep on putting out there. I think 2013, the 19th of July, this month, was a very, very emphatic sort of year and date for me. So I met my spiritual master, and I think with his grace, somehow, you know, things started falling in place. My son went to England to study, and, you know, then you could create time again to attend to what you really liked, and you started liking it again. Right. You know, because एक time होता था मुझे उस साल में याद है 13 फिल्में थी शायद. तो वो समय दिया ही नहीं था. You know, तो पता भी लग गया आपको कि ऐसा ऐसा हो गया है, और the end तक आप थे ही नहीं साथ में, literally. You know, even after, I remember after the चौथा also, I think कोई ब्लू या किसी की शूटिंग के लिए जाना था मुझे, क्योंकि अभी इसमें you can't resign, it's not like a 9 to 5. Yeah. So then I stopped taking on, you know, till such time he grew up into an adult and, you know, things like that. So abhi, luckily for me, it's a very good space I'm in right now in terms of I can attend to what I want with the sort of again that same single-mindedness. कहानियाँ सुन सकता हूँ. अभी गाड़ी में भी अक्षता बहुत फ़ोन कर रही थी मुझे
एक नई कहानी एंडमॉल सुना रहा था वहाँ से कोई बहुत अच्छा एक कुछ शो बना रहे हैं वो. Are you surprised at the scale? ये जो shows के बन रहे इतने You know, I'm not करोड़ों पे surprised खर्चे- because you know the way. I mean, if you look at the foreign shows, Yes. I think we've begun to just scratch the surface. Correct. है ना? Yes. I mean, I'd rather be in a terrific show today Yeah. than be in a lousy film. Yeah. You know, I look at it that way. Films I've enjoyed, like 2-3 films which I really liked. I did Operation Parinde with Amit. Then there was Raat Baki, a thriller. But these are all web releases. Yes, of course. So unless you're watching those platforms and looking out for those projects, Yeah. then and of course cinema was also there. Cinema, some really terrific work is happening. So You're working with Sunil Shetty again as well. yeah, in fact, incredible. so when I look at him, you talk about me, and when you look at fitness, man, what is he looking like? Yeah, Yeah. But वो तो he is looking terrific. आप भी ऐसे ही थे ना? I remember, मैं एक कहानी सुनाता हूँ अभी वो 64 साल के हो गए हैं. आपको. कोई ये कह दे कि except for the silver, Yeah. he looks great. वो भी नारियल पानी को लेकर ऑब्सेसिव हैं. Yeah. और मैं बताता हूँ कि राहुल सर की एक बहुत पुरानी एक वीडियो था, मार डाला निर्मल पांडे का, बहुत पुराना वीडियो है. एंड सर आप थे उसमें और मलिका जी थी उसमें और बड़ा वर्कआउट चलते रहता था आपका. Yeah. अब मॉर्निंग टू नाइट सर, रात को 4 बजे बिफोर द शॉट you were working out. That is a single-minded dedication. That is You were part of it? That no, but I knew the dancers that were there. Actually लोगों के dancers थे वहाँ पे. Yeah. तो बोलते रहते थे कि this, and I used to say यार ये हमारी नींद नहीं आ रही है. सुनील शेट्टी भी सेम थे. You know he done 2-3 films with my wife. सुबह उठ के नारियल पानी, शाम को नारियल पानी, ये मेरी सॉल्ट्स होनी चाहिए, ये खाना. And लोग बोलते थे कि how? That's why you can continue like this. So do you feel that this kind of discipline is the reason why that there will be a very long career? Like you and Anna, when you meet together, what are you all discussing now? अब तो उनके बेटे भी वापस एक्टर बन गए. Family mostly, and you know where life has taken us. But I think I look at not it in terms of career. I mean, I think well-being and fitness. I mean, I've lost a partner to cancer. Yes. So you know, I mean, अभी मैं क्या ही बोलूँ कि you know how important is health. I think it's such a rare gift, the human body. It's the greatest gift that anybody can get. Is a healthy, beautiful body with everything, all the limbs intact, eyes, all the, you know, hearing, all the senses alive. It's the biggest gift. So I think what can you do here to sustain that gift is you will probably just look after it till such time you're here and to enjoy. I mean, I lost my father, he was 91, but hail and I hearty. think till 90, he had a full life. Wow. Like he was driving his own car, he was walking frisky dogs like a lab and a bloody Dalmatian. He was going for walks for 2 hours. The last 1 year, I think, is dementia. So, you know, that he suffered, you know, loss of memory and all of that. I've had the great pleasure of meeting, we were shooting for Mubarka, climax था, गुरुद्वारा था इसका इंग्लैंड में. तो एक बड़े बुजुर्ग सरदार जी आए थे, पंजाबी च मिले कि कहंदे भी की हाल है. मैं कहा जी बस वधिया, एक गल्लां होदे मतलब 30 minutes we spoke. And then while he was going, he said उत्थे चलने आ, you know, उत्थे people won't disturb us. मतलब let's go the other way and you know people won't. I mean, he had a really wrinkled face and I thought, I mean, this is what happens in age, you know. Why would people want to disturb this man? Yeah. You know. But I played along. Yeah. And we went the other side. We had a fair amount of. So I was just sort of being nice to him. Yeah. He went off his way. I went off mine back to the shot. And there was another person who came. He said, "Pachania?" I said, "Nahi ji." So he says, "Fauja Singh." Oh, marathoner. So Fauja Singh is 100+ my hero. Yeah, he was Wow. that time 106. Oh, teri. He was 106 and he was the record holder of the seniors marathon, which he was still that year the record holder. And he is now with the Lord's grace. I think he's crossed 110. So he is one of the most incredible human beings. He's 110 years old. So और वो marathons पता नहीं कितने सालों से भाग रहे हैं. He started very late in his life. he started at 60, you know, he started running at 60. And so, you know, when for all those people who say life is too late and this and that and the other, 60 साल में आदमी ने दौड़ना शुरू किया. वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सीनियर मैराथन का. हर साल वो सीनियर्स खाली यही है 10 किलोमीटर का दौड़ होता है. But at 110, I mean, if somebody is lucky enough to get there, hale and hearty and healthy.
So I went back running to him. I said, Fauza ji, I'm sorry I couldn't recognize you. And then, क्योंकि मैंने ना उनकी तस्वीरें खाली देखी थी वो उस पे Google पे या कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है वो. तो मैंने कहा यार कोई एक सीक्रेट तो बताइए आपकी ये longevity का. So he says, and he genuinely meant it. I think for the last more than a half century, 54 years, he said. He said, I've had the same food. And he said, it's always been homemade food. He doesn't eat out. Not even the rare Gurdwara ka thoda kabhi kada prasad he's had. But normally he has the same palak, same dal, same. So it's very boring. But that's the same time he sleeps. But that's again Akshay Kumar, same thing, like same times, clockwork, So I think the energy when you get when you're performing and the energy, like I don't tire, मुझे 4 घंटे सोने को मिल जाते हैं ना, I'm a very happy man. सर यही तो सक्सेस वाला होता है, 4 से 5 घंटे वाले. हमारे कुछ दोस्त हैं जो बोलते हैं कि सर जेफ बेजोस सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, हमें भी ऐसे बनना है. यार मैं जेफ बेजोस नहीं हूँ यार. I mean, but शाहरुख भी यही बोलते थे कि 4-5 hours. I've also never felt the need to sleep. मेरी आंखें अपने आप ही 5-5 बजे उड़ जाती है, खुल जाती है. And I feel कि this younger generation doesn't understand the meaning of this. No, यार ऐसा नहीं है. It's a very aware generation. I feel the younger generation, as you have to learn a lot. There's such a aware lot. I mean, most of these guys who are making apps. Yes. They're all under 30, man. वो Clear Trip वाला तो is a junior of mine from school. So there's so much of learning, I think, with the new age. I think they understand the mediums, their priorities are so clear. क्या करना है उनको पता है. And they're cracking it. अरे big time. $7 billion Big time. What will I enjoy the most from Rahul sir in the next 6 months that you are all really looking forward to? Which show, which film, which series? So I think close to my heart, purely because it has got Anna as the lead. It's his comeback show. Is Blind Woman, or it's on MX Play. So I had a great time working on it. Naturally because of him. There's Isha Deol in it. So it was a good reunion. And though I'd never worked with Isha pehle, but I'm very close to Bobby and Sunny Bhaiya. So it was nice. And actually speaking, Bobby की life change हो गई है. देखो ना. MX player and with so happy and so proud of him, यार. So proud of him. So maybe this is. I think 4 फिल्में या 5 फिल्में हम लोगों ने की हैं साथ में. 4 की हैं शायद. तो बहुत मुझे एक्सरसाइज का तो तब भी शौक था, तो मैं ऐसे बहुत बोलता था यार चाहते हैं एक्सरसाइज करने, तो तू आज कर, मैं आता हूँ कल. So वो कल इनका आता नहीं था. अभी आ गया. अभी देखिए क्या कल आया है उनका. अभी मुझे कहना पड़ता है कि यार मैं आता हूँ तेरे साथ. So it's just a matter of getting that one moment of inspiration, I feel, and that can create magic here. I think जिंदगी में यही तो आश्रम के बाद यही. And it'll be great to see. I think a lot of the channels and the OTTs are driving the public to them. And then usi ke I think versions will now start to see, like, so Bobby's now started appearing on the big screen as well after that. It's resurgence in his career. Yes. And I think that's the way the public just wants to know. The producers want to know that the public is accepting you again in this new avatar, and that's it. Yeah, absolutely. Back in action. Absolutely. So that'll be something that we're really looking forward to. Rahul Dev, as usual, is an inspiration. And he's given me 3. I'm still trying to put my head around it. Ki Fauza ji started running at 60. Oh yeah, he unreal. I mean, that's what he told me. So no, but it's true. But I've seen him at he has 100. no reason at 106 to tell me कि यार सर इंश्योरेंस और मेडिक्लेम बहुत सोचना पड़ेगा सर 80 के बाद. अभी देखिए ना यार कि ऐसे अगर 80 तक पहुंचे तो with God's grace पहुंच जाएंगे मुझे लगता है. तो 100% होगा सर. Thank you so much for joining us. Welcome. You always learn so much, because how should I say this? बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अपनी ही दुनिया में बहुत खो जाते हैं. I have the great honor and privilege always to peek into somebody else's lives and sort of reassess how am I thinking about my own life. Why? I think we've gone places, yeah. We shot a film together. Yeah, but yes sir. But अभी 20 साल आपका देखिए ना कहाँ आप चले गए. नहीं, अब मैं इसी काउच पर 20 साल से हूँ. I like it. Yeah, you're doing really well. Thank you so much for joining us. We'll see you soon. Take care. And of course, B4U Entertainment all over the world. This will be out very soon. And all your love and all your likes and shares, all that will always work. Take care and bye-bye.